Hey guys, good evening to all of you. Now this was lovely day today, guys. Seriously. Now there are some of the glimpse of the kind of messages that I've got today. I'm really thankful. Can't be more overjoyed. You know, there were a couple of moments when I was like really feeling like crying. I've got 83 in SFM. Just read these messages. Sir, I've cleared SFM. I took coach in Jackass to Infinity. Thanks for clearing SFM. Got 68. Janam has cleared SFM. Too good. Guys, I'm really sorry. Just read the message beyond. Hey all, this was not just isn't your result day. It was I was equally nervous and excited. Got this, guys. Each message that I got, guys, have given me equal amount of happiness, respect, unbelievable. I'm really truly humbled. However, guys, I could not include every message in this collage. I just gave you a little bit of a glimpse. In fact, I've received like 150 messages today across the day. uh, Mostly they were good. There are some sad also. I'll get in touch with you guys. So I really love you guys. And just one suggestion from me today: stay healthy, stay grounded, stay fit. लव यू गाइस. ठीक है, आज के सेशन पे जाता हूँ मैं. आज मैं तुम लोगों की इसके साथ साथ मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक और चीज़ गाइस, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए. दैट CA चैम्पियन, CA फाइनल is rewarding you. Guys, you can get 10x of your fees rewarded for rank 1 to 10 and 11 to 15x of your fees rewarded. 11 to 50 के rank में 3x of your fees refunded subject to maximum of 2 lakh rupee. So guys, please go ahead, claim your kind of gifts now. So any rankers which I have not got in touch yet, and if you have got through, please do that. एक और छोटा सा information है guys. Particularly this is my video for CA inter students. So guys, Mahabalis, we are a group of educators. We run with the group name of Mahabali. So you can see this, guys. 11th Feb, that is from tomorrow, we are starting this fresh batch for CA inter November 22 attempt. We have given you the contact number also, so please contact on it for any other details that you want. Guys, accounts will be taken by me, that is RAHULMALKAN. Tuli sir will take taxation, Popley sir will take law, and Sunil Keshwani sir will take costing. Got that? Guys, I've given you the purchase link in case if you want to subscribe to these videos. You can catch me on Academy live platform and use my code RM10. Get everything that you want. ठीक है, आज particularly मैं आपसे क्यों मिल रहा हूँ? I'm meeting you so that I can teach you AS11. That is revise AS11. Sorry, not AS11, AS12. That is accounting for government grants. Guys, what are we going to learn in this accounting for government grants? First one is introduction. Second one, scope. Third one, government grants, recognition. When will we recognize the government grant? Accounting for government grant. What will we do with non-monetary grants? Presentation of the grant in the balance sheet in the profit and loss account, and refund of government grants. Got that? First one, introduction. Guys, what are government grants? AS12 deals with government grants, its recognition, measurement, non-monetary grant, presentation in financial statements, and refund of government grant also. Scope. This standard does not deal with. What does this standard does not deal with? It does not deal with specific problems arising from the government grant in financial statement reflecting the price changes. So any price changes and government grants relating to that, not touched by AS12. Government assistance other than in form of government grant, not covered in AS12. Government participation in the ownership of an enterprise, not covered under AS12. But that's my scope. What are government grants? Students who have studied from me, I've made you remember the definition in part. The government grant is assistance by the government in cash or in kind to the enterprise for past or future compliance with certain conditions. That is government grant. So what is government grant? Government grant is an assistance by the government in cash or in kind to an enterprise for the past or future compliance with certain condition. That's government grant. एक बार बिना देखे मेरे साथ repeat करो. Government grant are assistance by the government in cash or in kind to the enterprise for the past or future compliance with certain conditions. Chakas, stupid. Recognition of the government grant. When will the government grant be recognized? Government grant will be recognized or not recognized until we have reasonable surety or entity is reasonably assured that enterprise will comply to the condition attached to the grant. Will. It's not we have complied. If we are sure that we will comply, you can recognize the grant. And second condition is that grant will be received. So we should have surety for two things. Surety for first thing is
We should have reasonable assurance that we will fulfill the conditions, and we should also have reasonable assurance that we will receive the grant. On that day, we can recognize the government grant, irrespective if the condition is satisfied or not, or irrespective of कि grant मिला है कि नहीं मिला है. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ग्रांट मिल जाए, ये जरूरी नहीं है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए. हम श्योर हो जाए ना कि हम सेटिस्फाई कर देंगे कंडीशन, और हम श्योर हो जाए ना कि हमें ग्रांट मिल जाएगा, उस दिन आप गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज कर सकते हो. ठीक है, चलिए डन. अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट. कितने मेथड है अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट करने के लिए गाइस? 2 अप्रोच. फर्स्ट वन इज कैपिटल अप्रोच एंड सेकंड वन इज इनकम अप्रोच. कैपिटल अप्रोच में गवर्नमेंट ग्रांट विल बी ट्रीटेड एज शेयर होल्डर्स फंड्स, एंड इनकम अप्रोच में हम उसे पीरियड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे. कौन सा अप्रोच फॉलो करना चाहिए? इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस बेसिस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रांट. गाइज, अगर ग्रांट हमारे शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूशन के लिए तो डेफिनेटली उसे कैपिटल अप्रोच में डालना चाहिए. अगर असेट के लिए तो कैपिटल अप्रोच डालना चाहिए. बट गाइज, अगर ये हमारे एक्सपेंसेस वगैरह के लिए है तो इसे इनकम अप्रोच फॉलो करना चाहिए. सो वी हैव गॉट 2 अप्रोचेस. फर्स्ट वन इज नोन एज कैपिटल अप्रोच एंड सेकंड वन इज नोन एज इनकम अप्रोच. दैट इज अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट. Recognition, when we are reasonably sure that a grant will be received, when we are reasonably sure that we will fulfill the condition. Accounting, capital approach, income approach. कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए? डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रांट. नॉन मॉनिटरी ग्रांट. गाइज, इफ यू आर रिसीविंग लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट, कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए? नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए. नॉमिनल वैल्यू 1 रुपी रिकॉर्ड कर दो, 10 रुपी रिकॉर्ड कर दो. दैट इज नोन एज अ नॉन मॉनिटरी ग्रांट. चकास, टू गुड. प्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट. गाइज, प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स. अगर हमें फिक्स्ड एसेट से ग्रांट मिली है तो 2 एप्लीकेशन है. मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा. फर्स्ट वन, गाइस, वी कैन रिड्यूस द ग्रांट फ्रॉम द प्राइस ऑफ एन एसेट, और सेकेंड, वी कैन ट्रीट द ग्रांट एज डिफर्ड इनकम. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? एंड चार्ज इट टू P&L in the ratio of the depreciation. या तो उसे asset से less करके दिखा दो. C method number 1. The grant is shown as reduction in the gross value of asset concerned arriving at a book value. A grant related to depreciable asset are treated as deferred income, which is recognized in profit and loss account on systematic and rational basis over the useful life of asset. Clear? Chakas. Next, presentation of grant related to income. 2. या तो उसे income other income में अलग से दिखाओ, या तो उसे related expenses से less करके दिखाओ. टू इनकम, आइदर इनकम में अलग से दिखाओ या तो एक्सपेंस से लेस करके दिखाओ. प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इन नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन. गाइस, द गवर्नमेंट ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन शुड बी ट्रीटेड और क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व. क्लियर? बहुत छोटा सा स्वीट स्टैंडर्ड हो रखा है. I will revise government grant once again with you. Guys, what is government grant? Government grant is assistance by the government in cash or in kind to the enterprise for the compliance of past or future, मतलब for compliance in past or future with certain conditions. Next one, when should we recognize the grant? When we are reasonably sure that we will fulfill the conditions of the grant, or and not or we will receive the grant. सर, कितने मेथड्स हो रखे अकाउंटिंग के? कैपिटल अप्रोच, इनकम अप्रोच. कौन सा अप्रोच कब फॉलो करना है? डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स. सर, अगर नॉन मॉनिटरी ग्रांट मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल लैंड मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दो. सर, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे करना है? अगर असेट के रिलेटेड ग्रांट है तो या तो असेट से माइनस करके दिखा दो, या तो डिफर्ड इनकम दिखा दो. सेकेंड, सर, अगर इनकम के रिलेटेड ग्रांट है तो या तो P&L अकाउंट में उसे अलग से इनकम दिखाओ, या तो फिर उसे एक्सपेंस से लेस करके दिखाओ. सर, अगर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन पे ग्रांट है तो सर कैसे करें? बेटा, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन पे अगर ग्रांट है ना तो बेटा उसे कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दो. जकास, चलिए, I will look at the questions and I'll solve the questions with you. First one, Z Limited purchased fixed assets for 50 lakh. It was estimated to have useful life of 5 years and salvage value is 5 lakhs. On the purchase of asset, government granted it a grant of 10 lakh. Government grant mila 10 lakh. Pass the necessary journal entry in the books of the company for first 2 years if the grant amount is deducted from the value of fixed asset. अगर ग्रांट का इनकम हम लोग फिक्स एसेट से लेस करके दिखा रहे हैं तो क्या करना है? सो गाइस, और इसीलिए मैंने एक इनकम अप्रोच एंड कैपिटल अप्रोच की बात रेडी रखी है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1. गाइस, grant deducted from gross value of asset. ठीक है, क्या करना है? अरे भाई रुक जा,
कितने का असेट खरीदा? 50 लाख रुपए का असेट खरीदा। जर्नल एंट्री गाइस, ईयर 1 का जर्नल एंट्री, डे 1, असेट खरीदा, एंट्री असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड असेट हम लोग ने खरीदा 50 lakhs। 50 lakhs, आई एम राइटिंग अमाउंट इन लैक्स। नेक्स्ट वन, ग्रांट कितने का मिला? 10 lakhs, एंड इट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द असेट। गाइस, ग्रांट मिलने का जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, इससे असेट को क्रेडिट कर दो, असेट का रिडक्शन दिखा दो 10 lakhs। डन। गाइस, लास्ट डे ईयर एंड पे 31 मार्च बोल सकते हैं। सो आई विल से लास्ट डे। लास्ट डे पे डेप्री चार्ज करना है। जर्नल एंट्री आएगा डेप्री टू असेट। अब डेप्री किस पे चार्ज करेंगे? बहुत सिंपल सी कहानी है। 50 माइनस 10, 40 का असेट था अभी तो, -5 is the scrap value given to you, divided by estimated life of 5 years. 5 is the scrap value divided by the estimated life of 5 years. So 40 minus 5 divided by 5. I'm getting an answer of 7 lakh as depreciation. 7 lakh as depreciation. ये हो गया हमारा ईयर 1 का कहानी। चकास। और ऑफ कोर्स एक और मैंडेटरी जर्नल एंट्री इज दैट कि वो डेप्रीशिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। सो डेप्री पीएनएल में जाएगा, सो पीएनएल टू डेप्री। गाइस, ईयर 2 पे फर्स्ट जर्नल एंट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइस, डेप्री चार्ज करना। सो एंट्री विल बी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, एंड डेप्री विल बी दैट 7 lakhs वंस अगेन। एंड यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ वो पीएनएल में ट्रांसफर करने का जर्नल एंट्री, दैट इज पीएनएल टू डेप्रीशिएशन अमाउंट इज 7 lakhs। जकास, याद आ गया तुम लोग को सब कुछ? टू गुड, ग्रेट। गाइस, नेक्स्ट वन, question number 2. Z Limited purchased fixed assets for 50 lakh, which had estimated useful life of 5 years and salvage value of 5 lakh. On purchase of asset, government granted 10 lakh rupees. Pass the necessary journal entry in the books of company in first 2 years if the grant is treated as deferred income. अगर ग्रांट को deferred income treat किया है तो क्या करेंगे? तो question number 2, चलिए ready? First one. Now here comes question number 2. Guys, year 1, day 1, पहले असेट खरीदो। असेट खरीद रहे तो एंट्री आएगी असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का असेट खरीद रहे हो? 50 लाख। सेकेंड एंट्री सेम डेट, ग्रांट मिल रहा है, एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बट इसे असेट को क्रेडिट नहीं करना है, इसे डिफर्ड इनकम को क्रेडिट करना है 10 lakhs। ठीक है गाइस, लास्ट डे ऑफ दैट ईयर, लास्ट डे ऑफ दैट ईयर पे क्या करना है? डेप्री चार्ज करना है। सो एंट्री आएगा डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। और गाइस, डेप्री किस पे चार्ज करोगे? 50 का असेट है, -5 ऑफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5। सो गाइस, 50 minus 5 डिवाइड बाय 5, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 9। डेप्री टू असेट इज 9। बट एक और चीज़ याद रखना कि डिफर्ड इनकम भी 10 है। सो गाइस, कंटिन्यू ऑन दैट लास्ट डे। लास्ट डे को डिफर्ड इनकम है 10, इसको भी 5 साल में अमोर्टाइज करके पीएनएल में डालेंगे, सो 2। तो अपना जर्नल एंट्री आना चाहिए डिफर्ड इनकम टू पीएनएल अमाउंट इज 2, और ये डेप्री जाने वाला है पीएनएल में, तो एंट्री आएगा अपना पीएनएल टू डेप्री, द अमाउंट इज 9। अगर पीएनएल अकाउंट देखेंगे तो पीएनएल के क्रेडिट साइड पे हमें दिख रहा है डिफर्ड इनकम ऑफ 2, पीएनएल के डेबिट साइड पे दिख रहा है टू डेप्री ऑफ 9। नेट इफेक्ट देखेंगे तो अभी भी पीएनएल में 7 जा रहा है, जो फर्स्ट केस में भी हो रहा था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 7 जा रहा था। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? चकास। ये कौन से ईयर की कहानी खत्म की हम लोग ने? फर्स्ट ईयर। अब कौन से ईयर की कहानी पे जाएंगे हम लोग? सेकेंड ईयर। ठीक है। सो गाइस, ईयर 2 सेम चीज़ें होने वाली है। तो दिस इज गोइंग टू बी माई ईयर 2। ईयर 2 पे क्या होगा? सेम डेप्री, एंट्री आएगा डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन विल बी 9 and 9। गाइस, यहाँ पे सेम पीएनएल अकाउंट को लेके जाएंगे, डेप्री को पीएनएल में लेके जाएंगे 9 and 9, और फिर से एक बार एंट्री पास करेंगे डिफर्ड इनकम टू पीएनएल, एंड द अमाउंट विल बी 2 and 2।
और हमारे पीएनएल में यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, नेट 7। जकास, एनी डाउट्स ऑन दिस? टू गुड। चलिए, ये हो गया प्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। गाइस, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अगर ग्रांट हमें रिफंड करना है तो गाइस एग्जैक्टली जो आपने ट्रीटमेंट किया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। अगर आपने उसे असेट के क्रेडिट में दिया था तो आप उसको असेट को ही डेबिट वापस करेंगे। अगर आपने उसे डिफर्ड ग्रांट को क्रेडिट किया था तो डिफर्ड ग्रांट को डेबिट करना जितना बैलेंस बचा था, और अगर एक्सेस बैलेंस बचा था तो उसको पीएनएल से निकालना। ठीक है, आई डू दैट क्वेश्चन ऑल्सो, दैट इज रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। हैव अ लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन। A purchased a machinery of 40 lakh, useful life is 4 years and residual value is 8 lakhs. Government grant was received for 16 lakhs. Show the journal entry to be passed at the time of refund of the grant in the third year. Third year में refund करना है. And the value of fixed asset if grant is credited to fixed asset or if the grant is treated as deferred income. Can I start working on this? चलिए guys, फिर से फर्स्ट से चालू करते हैं. I'm here. चलिए, फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अभी हम लोग? आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3, अल्टरनेटिव नंबर 1। ग्रांट इज क्रेडिटेड टू असेट। अगर ग्रांट को हमने असेट को क्रेडिट किया है तो रिफंड करते वक्त क्या होगा? ईयर 1, डे 1, एंट्री आएगा असेट टू बैंक। कितने का असेट खरीदा था? सर हमने असेट खरीदा था 40 लाख रुपए का। चलो 40 लाख रुपए का असेट खरीदा। एंट्री नंबर 2, ग्रांट मिला 16 लाख का। एंट्री बैंक टू असेट, 16 लाख का ग्रांट मिल गया। नेक्स्ट वन, एंट्री नंबर 3, अब असेट कितने का हो गया? 40 माइनस 16, दैट मीन्स असेट इज कॉस्टिंग 24। सो रेसिडुअल वैल्यू 8 था, लाइफ 4 years था। तो गाइस वील हैव अ डेप्रीशिएशन, so it will be depreciation account debit to asset. Guys, it is 24 is the value of asset minus 8 was the scrap value divided by the estimated life of 4 years. Guys, 24 minus 8 divided by 4, I'm charging a depreciation of 4 lakhs, so depreciation of 4 lakhs. Jakas. Guys, fourth entry is P&L account debit to depreciation, and P&L account debit to depreciation is 4 class. Year 2, फिर से एक बार सेम गाइस, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट एंड द अमाउंट विल बी 4। एंट्री नंबर 2, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू द डेप्रीशिएशन, अमाउंट विल बी 4। ईयर 3, द ग्रांट इज रिफंडेड। इफ द ग्रांट इज रिफंडेड तो आपने ग्रांट लेते वक्त एंट्री पास किया था बैंक टू असेट, इसी एंट्री को रिवर्स कर दो। एंट्री आ जाएगा असेट अकाउंट डेबिट to bank and the amount will be 16। ये करने के बाद अपनी असेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो गाइस, यहाँ पे असेट की वैल्यू 24 थी। 24 में से आपने फर्स्ट ईयर डेप्री चार्ज किया 4, सेकेंड ईयर आपने डेप्री चार्ज किया 4, और प्लस आपने अभी ग्रांट रिफंड कर दिया 16। सो 24 माइनस 4 प्लस 16, अपनी ग्रांट और असेट की वैल्यू हो गई 32। Now the depreciation will be charged on 32। तो ईयर 3 में अगर अपने को कोई बोलेगा डेप्री चार्ज कीजिए तो ईयर 3 के डेप्री का कैलकुलेशन होना चाहिए 32 माइनस अज्यूमिंग दैट स्क्रैप वैल्यू रिमेन्स 8, जो यहाँ पे भी था, बट यू हैव ओनली 2 years of life left। So guys, it is 32 minus 8 divided by 2 years of life, depreciation will be 12। So year 3 पे journal entry for depre will be depreciation account debit to asset, amount is 12, and P&L account debit to depreciation, the amount is 12 and 12। Tell me, Chakas, clear? Good। ये अल्टरनेटिव नंबर 1 था, दैट ग्रांट इज क्रेडिटेड टू असेट। अब अल्टरनेटिव नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। तो अल्टरनेटिव नंबर 2, here comes my alternative number 2, and what is alternative number 2? Grant is credited to deferred income। ओ वाओ सर, क्या करेंगे सर इस पे? बेटा ईयर 1 सबसे पहले असेट आ जाए, तो असेट टू बैंक, कितने का असेट खरीदा?
सर असेट खरीदा हम लोग ने 40 लाख का, डन। सर ग्रांट मिल रही है, एंट्री बैंक टू डिफर्ड इनकम। अब ये एंट्री को रिकॉर्ड करके मैं हाईलाइट कर देता हूँ 16 एंड 16, बिकॉज जब रिवर्स मारेंगे तो इसी एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। चकास, टू गुड गाइस। थर्ड एंट्री डेप्री। अब डेप्री टू असेट कितना लगेगा गाइस? डेप्रीशिएशन होगा 40 पे, तो 40 is the value of asset minus 8 is the scrap value divided by 4 years of life. So 40 minus 8 divided by 4 years of life, answer is 8. Depre to asset is 8 and 8. Are we clear? Jackass. Too good. Guys, next thing, let's not forget that is P&L account debit to Depre. So how much is P&L to Depre? That is 8 to 8. बट डिफर्ड इनकम को भी पीएनएल में डालना पड़ेगा 4 इयर्स के लाइफ में, तो एंट्री आना चाहिए अपना पीएनएल अकाउंट डेबिट टू और डिफर्ड इनकम टू पीएनएल, डिफर्ड इनकम टू पीएनएल, and the amount should be 16 divided by 4, answer comes to 4, that is 4 and 4. ये year 1 complete हुआ। चकास गाइज, अब year 2 पे जाता है। year 2 सेम कहानी, Debris to asset 8 and 8, P&L to debris, P&L to debris will be 8 and 8. Guys, deferred income to P&L, the amount will be 4 and 4. Tell me, are we understanding this fantastically well? Too good. Jackass. And guys, year 3 पे अभी ग्रांट रिफंड करनी है। ग्रांट रिफंड करनी है तो एंट्री आना चाहिए डिफर्ड इनकम। बट अब ये याद रखो कि डिफर्ड इनकम में था कितना गाइस? डिफर्ड इनकम में 16 था, 4 पीएनएल में डाल चुके हो, फिर से 4 पीएनएल में डाल चुके हो, तो 4 एंड 4 हो जाता है 8। सो इट इज डिफर्ड इनकम टू व्हाट? बैंक। बट डिफर्ड इनकम को क्रेडिट करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 था, और बैंक में हमें रिफंड करना है 16। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट फॉर 8। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस जर्नल एंट्री। और डेप्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे डिफर्ड इनकम रखा था, असेट की वैल्यू तो चेंज ही नहीं की, तो असेट विल स्टिल बी डेप्रिशिएटेड एट द सेम लेवल, दैट इज डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, एंड डेप्री टू असेट विल बी 8 and 8, and P&L to डेप्री will be 8 and 8. Jikas, too good. Thank you. Got this. This is AS12, that is government grant. I love you all guys. I hope you understood everything. एक बार फटाफट से, what is government grant? Government grant is assistance by the government in cash in kind to the enterprise for compliance with some past or future conditions. Are we exactly clear with that one? Next one, point number 2, recognition, when we are reasonably sure that we will receive the grant and conditions attached to the grant will be fulfilled. Capital approach, income approach. Non-monetary grant, nominal value. Presentation of the government grant, asset credited to asset or credited to deferred income. Income either goes to P&L, other income separately or less from expense. अगर promoters contribution है, capital reserve. रिफंड करेंगे तो asset में क्रेडिट किया था तो asset को डेबिट कर दो, अगर deferred income को क्रेडिट किया था तो deferred income को डेबिट कर दो, excess आएगा तो P&L को डेबिट कर दो। Jackass, love you and thank you for today. Really humble. Love you. Take care.